बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा के एमसीक्यूज। और हस्बे रिवायत हम जो ओवरऑल एमसीक्यूज हैं तमाम तर चैप्टर्स इस नॉवेल से पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स को। तो ये सारे एमसीक्यूज इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे सुन लेंगे तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपकी इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है, द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा वाज रिटन बाय एंथनी सिम्पसन, एंथनी ऑफ हॉकिंस, एंथनी ह्यूज, एंथनी हॉपकिंस. Besides being a famous novelist, Hawkins was a successful businessman, painter, sculptor, lawyer. The novel The Prisoner of Zenda was written in 1564, 1893, 1894, 1965. The novel The Prisoner of Zenda was published in 1564, 1893, 1952, 1894. पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स को लिख लें ताकि आप इसे रिज्यूम करके उन्हें चेक कर सकें। Here are the right answers. पहले का एंथनी ऑफ हॉकिंस, सेकंड का है लॉयर, थर्ड का है 1893 और फोर्थ का है 1894। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेकेंड ईयर का नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा की कंप्लीट चैप्टर वाइज शॉर्ट करके समरी समझ सकें, सुन सकें, तो पूरा नॉवेल समझ में आ जाएगा उस लिंक के थ्रू जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन में मौजूद है। उसे क्लिक करके आप उसे सुन सकते हैं। The main scenes and plots of the novel were set in an imaginary kingdom named Utopia, Britannia, Britannia, Ethiopia. The language of Britannia is French, English, Spanish, German. The capital of Britannia is Dresden, Strelso, Tyrol, France. The Prisoner of Zenda is actually Rudolf Rassendyll, Rudolf Ellsberg, Black Michael, Colonel Sapp. पॉज कर लें अपनी वीडियो को और उसके बाद अपने आंसर्स लिख लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। 5 का है ब्रिटानिया, 6 का है जर्मन, 7 का है स्टेल्सो और 8 का है रुडोल्फ एल्सबर्ग। The hero of the novel is Rudolf Rassendyll, Rudolf Ellsberg, Black Michael, none of these. The villain of the novel is Rupert of Hansel, Maxolf, Degoted, Black Michael. The novel The Prisoner of Zenda is narrated by Michael Sapp, Flavia Rassendyll. 12th Antoinette de Maubant was a French widow, German widow, Canadian widow, English widow. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Here are the correct answers. 9 का है रुडोल्फ रसेंडल, 10th का है ब्लैक माइकल, 11 का है रसेंडल और 12th का है जर्मन विडो। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर के तमाम तर चैप्टर्स के प्रोस के तमाम तर चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स वो भी सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन है वहां पर प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, वो क्लिक करके आप उन सबको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। Rudolf Rassendyll was French, English, German, Belgian. Rassendyll goes to Britannia in order to violate his family traditions. Heard Rose, see the Zenda castle, witness the coronation. Black Michael has been mentioned as a half-brother to King Rudolph V because he was from morganatic marriage of late king. He was not considered son of the late king. Never lived with Rudolf Ellsberg. Was jealous of Rudolf Ellsberg. तो अपनी वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख लें ताकि आप और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर लें ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें। 13 का आंसर है इंग्लिश, 14 का आंसर है विटनेस द कोरोनेशन, 15 का आंसर है was from morganatic marriage of late king. Black Michael is far more popular than the King Ellsberg, even though he is a villain because he lived among his people, had a good character, Britannians are afraid of him, was legal heir to throne. Black Michael wished to marry Flavia because he loved her, wished to make Maubant jealous, wanted her palace, wished to gain the throne. Black Michael was not legal heir to the throne, still he was the king of France, the police chief, prefect of Britannian police, duke of Strelso. पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स को लिख लीजिए, उसके बाद रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Here are the right answers. 16 का है lived among his people, 17 का है wish to gain the throne और 18 का है duke of Strelso. After the coronation, she was to become the queen of Britannia, the countess of Helga and Madame Antoinette de Maubant. Princess Flavia, none of them. Fritz von Tallenheim was in the service of the king and was the colonel in the Britannian army, captain in the Britannian army, soldier in the Britannian army, and a spy of the king. Sapp was in the service of the king and was the traitor of the kingdom, captain in the Britannian army, soldier in the Britannian army, colonel in Britannian army. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the right answers.
19 का है प्रिंसेस फ्लाविया, 20 का है कैप्टन रिटानियन आर्मी और 21 का है कर्नल इन रिटानियन आर्मी। अगर आप चाहते हैं सेकेंड ईयर की तमाम तरह पोएम्स के एमसीक्यूज अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपके स्क्रीन की टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है उसे क्लिक करके वो वीडियो और उन तमाम तरह वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। The six were the ruffians kept by Black Michael, Rudolf Ellsberg, Rudolf Rassendyll, Colonel Sapp. Lord Burleson was the brother of Black Michael, Rudolf Ellsberg, Rudolf Rassendyll, Lord Hanzo. George Federelli was a diplomat in the British Embassy, Britannia, Tyrol, Dresden, Paris. Marshal Strickland was the commander-in-chief of Britannian Army, English Army, French Army, none of them. पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स को लिख लीजिए और उसके बाद इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। 22 का आंसर है ब्लैक माइकल, 23 का आंसर है रुडोल्फ रसेंडल, 24 का आंसर है पेरिस, 25 का आंसर है रिटानियन आर्मी। The age of Rassendyll shown in this novel is 28, 92, 27, 29. The brother of Rassendyll is Lord Emmons, Lord Jacques, Lord Burleson, Lord Jacques नहीं, Lord Jack, or Lord Hanzo. Rassendyll goes to Zenda by train with George Federelli, Bertram, Moba, Sapton Fritz. Rassendyll visits Britannia proudly, forcibly, secretly, fearfully. आपने करना यह है कि आपने अपनी वीडियो को पहले पॉज करके इन तमाम तरह आंसर्स को लिख लेना है और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लेना है। Here are the right answers. The age of Rassendyll shown in the novel is 29 और 27 का Burleson, 28 का है Moba और 29 का है secretly. The Castle Zenda was a country residence of Black Michael, Rudolf Ellsberg, Rudolf Rassendyll, Bertram. The king was notorious for drinking wine so much, not caring his country, living abroad, fighting duels. Black six ruffians were named as Michael's ruffians. The Duke's man, the six, the gang. These two persons are distant relatives in the novel, Michael and Ellsberg, Ellsberg and Rassendyll, Moba and Michael, Flavia and Helga. Pause the video, write down your answers और फिर से resume करके आप अपने answers को check कर लें। Here are the right answers. 30 का है Black Michael, 31 का है drinking wine so much, 32 का है the six, 33 का है Ellsberg and Rassendyll. A striking resemblance between Rassendyll and Ellsberg was because of plastic surgery, coincidence, distant relationship, luck. Who shows concern about Rassendyll doing nothing? It was his brother Robert, his sister-in-law Rose, his friend George Federelli, none of them. Rassendyll was persuaded to accept a job offered by Colonel Sapp, Rudolf Ellsberg, Rupert of Hanzo, Sir Jacob Bordell. आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the right answers. 34 का है distant relationship, 35 का है sister-in-law Rose और 36 का है Sir Jacob Bordell. Rassendyll was offered a designation at the embassy. It was of ambassador, diplomat, minister, lawyer. Rudolf Rassendyll thought to visit Britannia on the pretext of visiting a place and studying the social and political affairs there. It was Tyrol, Dresden, Paris also. In Paris, Rassendyll met Sapton Fritz, George and Bertram, Black Michael and Rupert, Lord Hanzo. Bertram was upset because of Antoinette de Mauban, George Federelli, Princess Flavia, Max Solf. Pause the video, write down your answers और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the right ones. 37 का आंसर है डिप्लोमेट, 38 का आंसर है टारल, 39 का है जॉर्ज एंड बर्ट्रम और 40 का है एंटोनेट डे मोबा। From Paris, Rassendyll went to Dresden, Tyrol, England, France. Throughout the journey from Tyrol to Zenda, Rassendyll was accompanied by George Federelli, Bertram Bertrand, Antoinette de Mauban, Rudolf Ellsberg. Rassendyll felt sure of his Ellsberg physiognomy for the first time by the favor done by Sapp in the forest, Ellsberg in the lodge, Sapp in the inn, Britannian custom officer. Pause कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें, उसके बाद रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। 14 का है ड्रेसडन, 42 का है एंटोनेट डे मौबा और 43 का है रिटानियन कस्टम ऑफिसर। अगर आप चाहते हैं कि आप ये देख सकें कि जो सेक्शन सी में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है उसे किस तरह से अच्छे से डील किया जा सकता है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस की जो वीडियो है वो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर शो हो रही है, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। When John, the Duke's gamekeeper, meets Rassendyll for the first time, he becomes happy, gets stunned, becomes furious.
gets relaxed. Coronation was to take place on Tuesday, Monday, Wednesday, and Thursday. In old days, the castle Zenda had been a hospital, monastery, fortress, chateau. आप इससे पॉज करके अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. यह है सही जवाबात. 44 का है गेट्स स्टंट, 45 का है वेंसडे, 46 का है फोर्ट्रेस. The castle Zenda consisted of two areas. One was old and the second one was new. Both the portions are connected by a deep wide moat, drawbridge, bridge, plank. When Rassendyll had slept calmly in the forest, he was awakened by a shot of fire. A stranger. The remarks given by Sapt, a robber. Sapt and Fritz were greatly amused when they met Rassendyll in the forest. By good French language, his red hair, his striking likeness with the king, his black hair. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. 47 का है ड्रॉब्रिज, 48 का है द रिमार्क्स गिवन बाय सैप, 49 का है स्ट्राइकिंग लाइकनेस विद द किंग. At supper, King Rudolph drank a wine that was presented by his advisor Michael Flavia Maxolf. The wine presented to the king was tasteless, drugged, smuggled, expired. The king had to leave first also on the coronation day at 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock. On the day of coronation, the king was lying unconsciously, very excited, very worried, or very active. तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके उनके करेक्ट आंसर्स देख लें. Here are the right answers. 50 का है माइकल, 51 का है drugged, 52 का है 8 o'clock और 53 का है lying unconsciously. 54, as man grows old, he believes in fate. Fate sent you here, and fate sends you now to still. So these words were spoken by Marshal Sapp, Fritz, Michael. Joan's mother listened to the entire planning of Sapp. Therefore, she was bound and gagged, killed, released, kidnapped, and killed. The insensible king was hidden in coal cellar, wine cellar, the stubble. A carriage. Who was left on the guard of insensible king? It was Joan, Joseph, Fritz, Marshal. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. सो हियर आर द राइट आंसर्स. 54 का है सैप, 55 का बाउंड एंड गैग, 56 का वाइन सेलर और 57 का है जोसेफ. And Strelso Rassendyll was received by Michael Strenkench, the sixth Fritz. Strelso was partly old and partly new. The new town of was in favor of Michael, Albert, Rassendyll, Flavia. After the coronation, Rassendyll was accompanied by Marshal Strenkench, Princess Flavia, Black Michael, Alsberg. The coronation, the public processions, and the post-coronation banquet were not much successful, quite successful, suspicious, quite troublesome. Pause कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. तो ये है सही जवाबात. 58 का है Strenkench, 59 का है Alsberg, 60 का है Princess Flavia, 61 का है quite successful. After the coronation, who was left outside the room of the king in order to prevent anyone from entering the king's room? Strenkench, Fritz, Maxwell, Joseph. Inside the lodge, the king was hidden in the coal cellar, provision cellar, wine cellar, none of these. The dried blood that is spread out the floor of the cellar was of Rudolph Alsberg, mother of Joan, Joseph, sister of the Countess Helga. पॉज कर लें वीडियो को और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. 62 का है फ्रिट्स, 63 का वाइन सेलर और 64 का है जोसेफ. 65 का है Rassendyll was persuaded to go back and keep the impersonation by Fritz, Sapp, Flavia, Joseph. The following morning of the coronation, a young man came to meet the imposter king. He was sent by Strelso, Flavia, Sapp, Fritz. In a fight with Michael's followers outside the lodge, Rassendyll was wounded in his shoulder, palm, finger, arm. पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. Here are the correct answers. 65 का है Sapp, 66 का है Flavia और 67 का है arm. To enhance the king's popularity, Rassendyll rides through the streets and calls upon Black Michael, Princess Flavia, Countess Helga, none of them. Fritz was interested in Antoinette de Beaumont, Princess Flavia, the Countess Helga, Anne's younger girl. The Countess Helga von Strozen was Flavia's lady-in-waiting, besides being her relative, companion, bosom friend, colleague. पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. Here are the right answers.
68 का है प्रिंसेस फ्लोविया, 69 का है द काउंटेस हेल्गा। पूरा नाम था इनका काउंटेस हेल्गा वन स्ट्रॉबजन। Countess Helga von Strovzen was Flavia's lady in waiting besides being her bosom friend. In the princess palace, after Rassendyll, who came to meet her, it was Britannian army chief, the chancellor, the minister. Among Michael VI, who paid their compliments to the Rassendyll in princess palace, they were Britannians, the foreigners, French, Belgians. वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the right answers. 71 का है द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो और 72 का है फॉरेनर्स। इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, तो हम इसका पार्ट 2 जो है वो जल्द अपलोड कर देंगे और उससे आपको जो है मजीद एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वैसे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में उसका, इसमें जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उन दोनों का लिंक्स भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको इसको ढूंढना ज्यादा ना पड़े। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।